Hello students, you are watching Learners of Physics. In this video, we will see units and dimension of fundamental and derived quantity. In mechanics, we have three fundamental quantity, that is length, then we have mass and time. Length is denoted by capital L, mass by capital M and time by T. Whenever we want to write down dimensions, we always write down dimension in a square bracket in terms of L, M and T. So, let us start with the first dimension. तो हम first dimension लेते हैं, that is for the length. So, if we want to write down the dimension of length, we have L1, mass and time both are absent. So, M0, T0. So, this is the dimensional formula of length. हमें पता है हम length measure करते हैं मीटर में, so its unit is meter, small m. Second quantity we will take, that is mass. Again, in case of mass, we have length absent. For m, we'll take power 1 and time is also absent. So, the dimensional formula for mass is L0, M1, T0 and its unit is kg. Third one we will take, that is time. And dimensional formula for time is L0, M0 because length and mass both are absent. So here we have T ka power 1 and unit for the time is seconds S. Fourth one we'll take, that is area. हमें पता है area क्या होता है? Area is length into width or breadth also we can say. लेंथ एंड विड्थ दोनों को हम इन टर्म्स ऑफ लेंथ में एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो विल राइट L इंटू L मतलब L स्क्वायर. सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया इज L और पावर 2. मास एंड टाइम दोनों एब्सेंट है, सो पावर 0. सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया. अगर हमें इसका यूनिट निकालना है तो वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस फॉर्मूला. L स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, सो इट्स यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर. Next physical quantity we'll take, that is volume. Now we know volume is what? It is length into breadth into height. ये तीनों quantities को हम length के term में explain कर सकते हैं. So this is L square, L means what? This is L cube. And अगर हमें इसका dimensional formula लिखना है तो L of power 3. मास और टाइम क्या है? एब्सेंट है, सो इट्स पावर इज 0. और अगर वॉल्यूम का यूनिट निकालना है तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन राइट डाउन दिस इज L स्क्वायर मतलब लेंथ का, सॉरी L क्यूब मतलब लेंथ का क्यूब, सो इट्स यूनिट इज मीटर क्यूब. दैट इज डेंसिटी. वी नो व्हाट इज डेंसिटी. डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, नाउ मास को हम लिखेंगे m एंड वॉल्यूम इज नथिंग बट व्हाट? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. तो अगर हमें इसको एक्सप्रेस करना है सो विल राइट डाउन हियर मास m एंड लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों को हम इन टर्म्स ऑफ लेंथ में एक्सप्रेस करते हैं. दिस इज L क्यूब. सो अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो विल राइट डाउन L. अभी देखो L क्यूब इट इज इन दी डिनोमिनेटर, तो अगर हम इसे ऊपर लेके जाते हैं तो इसका पावर हो जाएगा -3. M is 1 and time is absent, so this is 0. So dimensional formula for density is L of power -3, M of power 1 and T naught. और अगर हमें इसका यूनिट निकालना है तो by using this formula we can write down unit. मास का यूनिट होता है kg and लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और यहाँ पे लेंथ क्यूब है, so it's a meter cube. So we can say this is the unit of density. Next quantity we'll take, that is velocity. अभी velocity क्या होती है? Velocity is rate of change of displacement. तो हम यहाँ पे लिखते हैं displacement upon
टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट को हम इन टर्म्स ऑफ लेंथ एक्सप्रेस कर सकते हैं, सो वी हैव हियर लेंथ अपॉन टाइम। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा L1, मास टर्म इज एब्सेंट सो m नॉट, और t नीचे है तो अगर हम इसे ऊपर लेके आते हैं सो दिस इज -1। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ व्हाट, वेलोसिटी। और अगर यूनिट निकला है तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो लेंथ इज व्हाट, मीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड इज व्हाट, इट्स ए यूनिट ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी विल टेक, दैट इज एक्सेलरेशन। Okay, now acceleration is denoted by what? E. क्या होता है acceleration? Acceleration is velocity. This is actually change in velocity per unit time होता है. So here we'll directly write velocity upon time. अभी देखो velocity को we can express in terms of displacement upon time, and this time is we'll write as it is. Displacement is nothing but what? Length upon time. नीचे आएगा और this time is also there, so this is t square. So if you want to write down the dimensional formula, then we have here L1, mass term absent है, so m naught, t denominator में जब ये ऊपर जाएगा इसका पावर -2 हो जाएगा. So this is the dimensional formula for what? Acceleration. और अगर हमें इसका यूनिट लिखना है तो हम ये यहाँ से लिखेंगे, लेंथ इज व्हाट, मीटर, एंड टाइम स्क्वायर है मतलब सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन. नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी विल टेक, दैट इज फोर्स. फोर्स विच इज डिनोटेड बाय F. फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अभी मास क्या है? मास इज ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी, सो वी विल राइट डाउन इट एज इट इज. एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम. अभी देखो यहाँ पे मास एंड दिस टाइम बोथ आर फंडामेंटल, बट वेलोसिटी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी को फिर से लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. यहाँ पे now onwards I'll write down displacement is equal to s. Okay, so this is what velocity को we will express in terms of displacement upon time. तो displacement क्या है? अगेन फंडामेंटल क्वांटिटी. हम इसे लिख सकते हैं m l, that displacement is nothing but length, and upon t square. तो अगर हमें यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है फोर्स का, सो इट विल बिकम, दिस इज लेंथ मतलब लेंथ का पावर 1, mass is also there, so this is m1 and t square डिनोमिनेटर में. तो जब ये न्यूमरेटर में आएगा दिस विल बिकम -2. सो द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स इज L1 m1 t -2. और अगर हमें इसका यूनिट लिखना है तो मास का यूनिट क्या होता है? kg. लेंथ इज नथिंग बट व्हाट, मीटर, अपॉन टाइम का स्क्वायर मतलब सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट, फोर्स. Next physical quantity will take, that is pressure. Pressure क्या होता है? Pressure is nothing but force per unit area. So this is force upon area. अभी देखो हमें दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले पता है, बट स्टिल वी विल सॉल्व दिस. सो फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन. एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू विड्थ और ब्रेड्थ. ओके, यहाँ पे देखो मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों हम इन टर्म्स ऑफ लेंथ एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो आई विल राइट डाउन हियर एल स्क्वायर, फंडामेंटल होगी, राइट. एक्सेलरेशन को वी विल राइट डाउन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अभी इन दिस फॉर्मूला वी हैव मास फंडामेंटल है, लेंथ स्क्वायर फंडामेंटल है, दिस टाइम इज ऑल्सो फंडामेंटल. अभी वेलोसिटी को एक्सप्रेस करेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट व्हाट, इट्स अ लेंथ, तो हम इसे लिखेंगे अभी m लेंथ अगेन l स्क्वायर एंड दिस t इंटू टी, मतलब यहाँ पे आएगा आपका t स्क्वायर. ये लेंथ के साथ ये लेंथ कैंसल आउट हो रही है, सो यहाँ पे आपको मिलेगा m पावर 1 अपॉन l. l क्या है? पावर 1 एंड t ऑफ पावर 2.
अगर ये ऊपर जाता है तो विल गेट हियर L minus 1 M1 T minus 2, and this is the dimensional formula of what? Pressure. That is L1 L minus 1 M1 and T minus 2. और अगर हमें इसका यूनिट लिखना है, so by using this formula we can write down mass is nothing but what? kg. Length मीटर physical quantity है, that is impulse. Impulse क्या होता है? Impulse is nothing but force into time. Impulse होता है force into time. Force को हम लिखेंगे mass into acceleration and this time is at it. अभी देखो mass and time both are what? Fundamental. हम acceleration को लिखेंगे velocity upon time. Okay, so this mass into time upon this time will get cancel here. यहाँ पे cancel होता है and velocity को हम लिखेंगे displacement upon time. Displacement को we can express in terms of length and नीचे हमारे पास है time. तो अगर हमें impulse का यूनिट लिखना है then we will write down L1 M1 T नीचे इसलिए -1. So this is the dimensional formula for what? Impulse. और अगर इसका यूनिट लिखना है तो by using this formula mass kg, length is in meter and time is in second. So kg meter per second. It's a unit of the impulse. Next physical quantity we'll take, that is work. Okay, so work क्या होता है? Work is force into displacement. Okay, force को हम लिखेंगे mass into acceleration और displacement हमें पता है हम s लेते हैं but in terms of length ही रहता है this. So we'll write down this is mass. Displacement को हम convert करेंगे in terms of length and acceleration को again we will write down velocity upon time. Then mass, length and this time fundamental है. Velocity को फिर से लिखते हैं displacement upon time. तो ये हमारा बन जाता है अभी mass, displacement को हम length में लिखेंगे तो L square upon T square. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा L square M1 T minus 2. Okay, so this is the dimensional formula for the work. और अगर हमें यहाँ से यूनिट लिखना है तो by using this formula mass क्या होता है? kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. और वर्क का दूसरा जो यूनिट है दैट इज जूल्स. हम वर्क को इन टर्म्स ऑफ जूल्स, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी विल टेक, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी. इसको हम ई भी लिखते हैं. सो वी नो द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी. ई इज इक्वल टू व्हाट? हाफ m v square. हाफ इज व्हाट? इट्स अ कांस्टेंट. तो कांस्टेंट के लिए कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं रहते. सो विल राइट डाउन हियर मास. मास एज इट इज फंडामेंटल है. वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और इसका है हमारे पास स्क्वायर. तो विल राइट हियर मास. डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे लेंथ. सो लेंथ का स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर. सो द इक्वेशन और द फंडामेंटल formula for the kinetic energy is L square M1 and T minus 2. एंड अगर हमें इसका यूनिट लिखना है तो इट्स एनर्जी. एनर्जी है तो डायरेक्टली यूनिट हम जूल लिख सकते हैं या फिर बाय यूजिंग दिस वी कैन फाइंड आउट kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर और जूल्स. Okay, next one we'll take, that is potential energy. Potential energy which is denoted by capital U. अभी देखो एनर्जी कोई भी रहे,
it can be heat energy, it can be kinetic energy or it can be potential energy. इनके जो डायमेंशनल फॉर्मूले है ऑल विल बी दी सेम. अभी देखो यहाँ से आपको प्रूव हो जाएगा. हमने ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है, अभी हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे एंड यू विल गेट द सेम आंसर. ओके, सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? हम पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ एम जी एच. ओके, सो m is nothing but what? It's a mass. This g is what? Acceleration due to gravity. और h क्या होती है? h is the height. Okay, तो mass and height को हम लिखेंगे length, right? Both are what? Fundamental. g is what? Acceleration due to gravity. मतलब ये acceleration है, तो ये g को we will write down velocity upon time. Again velocity is not a fundamental, तो हम इसे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अभी देखो डिस्प्लेसमेंट को हम इन टर्म्स ऑफ लेंथ कन्वर्ट कर सकते हैं. सो विल राइट डाउन हियर m l स्क्वायर, इसको हमने l लिखा है, सो l स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर. देखो अभी क्या आता है, l ऑफ पावर 2, मास ऑफ पावर 1 एंड टाइम डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो -2 पावर 2. And if you want to write down the unit, again this is kg meter square upon second square. तो देखो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले एज वेल एज यूनिट क्या है, सेम है. सो एनर्जी कोई भी टाइप की रहे, इसके जो यूनिट एंड डायमेंशंस रहते हैं वो सेम रहेंगे. आगे जाके हम हीट का भी फॉर्मूला देखेंगे. हीट में भी आपको, हीट इज व्हाट? अगेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उसका भी फॉर्मूला आपको सेम. नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी विल टेक, दैट इज पावर. पावर क्या होता है? पावर इज वर्क अपॉन टाइम. वर्क को हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एज इट इज. अभी देखो फोर्स को वी विल राइट डाउन मास इंटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट को हम कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड टाइम एज इट इज. यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज है मास, लेंथ एंड टाइम. एक्सेलरेशन को फिर से लिखेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम. अभी देखो m l दिस t स्क्वायर, वेलोसिटी को लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अभी देखो क्या आता है, दिस इज मास, लेंथ, दिस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ, सो विल राइट हियर l स्क्वायर अपॉन t क्यूब. तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, l पावर 2 मास m1 एंड t -3. So this is the dimensional formula for what? Power. और अगर हमें इसका यूनिट लिखना है तो यूनिट आएगा kg मीटर स्क्वायर अपॉन t क्यूब. और t क्यूब इज नथिंग बट व्हाट? सॉरी, इट्स अ सेकेंड. ओके, एंड पावर का अगर हमें दूसरा यूनिट चाहिए तो दिस इज व्हाट? डिनोटेड बाय w. So this is what? Dimensional formula for the power. Next one we'll take, that is momentum. Momentum is nothing but what? Mass into velocity. अभी हमें पता है mass as it is, velocity को हम लिखते हैं displacement upon time. Displacement is nothing but length, so ml by t. तो अगर हमें इसका यूनिट लिखना है तो L1 M1 T -1. इट्स अ डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट क्या बनेगा? बाय यूजिंग दिस kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड. नेक्स्ट वन विल टेक, दैट इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? दिस आर द नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम. सो फ्रीक्वेंसी f इज डिनोटेड बाय 1 अपॉन t. तो इफ यू वांट टू राइट डाउन द यूनिट, लेंथ एंड मास दोनों एब्सेंट है, टाइम इज इन द डिनोमिनेटर, सो विल टेक इट अप, तो ये बनेगा -1. सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी. और अगर हमें यहाँ से यूनिट लिखना है तो विल राइट डाउन हियर
1/2, इसी को हम लिख सकते हैं per second, or hertz is another unit of the frequency. Next one we'll take, that is wavelength. Wavelength क्या होती है? Wavelength, it's denoted by lambda. It's a length of one wave. मतलब बेसिकली ये लेंथ है. सो लेंथ है, इसीलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा L1 m नॉट t नॉट, और ये लेंथ है इसीलिए इसका यूनिट रहेगा मीटर और एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट. एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट को हम लिखते हैं 10⁻⁻10 मीटर्स. Next one we have, that is stress. Stress is nothing but what? Force upon area. फोर्स को हम लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, और एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ. सो मास क्या है? फंडामेंटल. लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ को भी हम इन टर्म्स ऑफ लेंथ लिखते हैं, तो दिस इज L². दिस एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो दिस विल बिकम मास L². टाइम क्या है? फिर से फंडामेंटल. सो वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी को लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट को वी विल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लेंथ. सो दिस इज मास लेंथ अपॉन L² t². So this L will get cancelled here. So this will become m L t². Okay. So यहाँ पे हमारे पास है that is L डिनोमिनेटर में. So this is -1 m1 t -2. This is the dimensional formula for the stress. और अगर इसका यूनिट लिखना है, so this will become kg per meter second square. Next quantity we'll take, that is strain. Strain क्या होता है? Strain is change in dimension. This is change in dimension upon original dimension. ओके मतलब बेसिकली चेंज इन डायमेंशन और नीचे है ओरिजिनल डायमेंशन. मीन्स व्हाट? इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, एंड व्हेनेवर देयर इज अ रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी देयर इज नो यूनिट. मतलब फॉर एग्जांपल आई विल राइट डाउन चेंज इन लेंथ. चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अपॉन ओरिजिनल लेंथ. मतलब ये रेशो क्या है? दोनों जगह पे हमारे पास लेंथ है, सो दे विल कैंसल आउट. तो जब कैंसल आउट होता है तो विल राइट हियर नो यूनिट एंड नो डायमेंशन. So wherever there is a ratio of same quantities, there is no unit and no dimension. So strain के लिए we don't have a unit and dimension. Now we will see another important physical quantities. So for temperature, we have fundamental quantity, that is theta. Then for electric current, we have fundamental quantity, that is E. Okay, so suppose we want to write down the units for this, then we will write down the dimensional formula and unit for a temperature. So we know fundamental quantity at temperature, that is theta. So we can directly write down, it is in the square bracket. Theta 1, and the unit of temperature is Kelvin. Then अगर हमें हीट के लिए निकालना है, हीट, as I already told you, heat is what? It's a form of energy, and all form of energy having the same dimension and unit.
तो वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन, वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशंस, राइट, एंड उसके डायमेंशंस हमारे पास आए थे L2 M1 T -2. सो सेम डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए होगा? हीट के लिए. तो अगर आपको याद नहीं आता है तो यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू दी काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिखो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, यू विल गेट दी सेम आंसर. और वही डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए है? हीट के लिए. एंड इट्स का यूनिट क्या होगा? जूल्स. देन विल टेक इलेक्ट्रिक करंट. Electric current. We know electric current is denoted by I और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? As I told you, करंट के लिए हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी A, तो we can write here A of power 1. You can write like this also, but there is no need. L naught, M naught, T naught and A 1, but there is no need to write down. This is also okay. And if you want to write down the unit of electric current, then unit of electric current will be ampere. और एम्पियर को हम लिखते हैं कैपिटल A. Next physical quantity we'll take, that is electric charge. Electric charge, which is denoted by Q. We know what is current. Current is rate of flow of charge, मतलब Q by T. तो इस फॉर्मूले से हमें मिलता है Q is equal to I into T, right? So I is nothing but, I के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी करंट के लिए क्या होती है? A. So this is A1 and T1. It's a dimensional formula for the electric charge. And if you want to write down the unit यहाँ से मिलेगा. What is the unit of charge? It's coulombs, which is denoted by capital C. Or from this formula you can write down ampere second. Next very important physical quantity we'll see, that is electric potential, which is denoted by capital V. Now we know electric potential V is nothing but work upon electric charge. Electric charge, that is W upon Q. Work can be expressed in terms of force into displacement. And electric charge is current into time. So force can be expressed in terms of mass into acceleration, and displacement is S upon current I into time t. If we look at this, then we have mass, displacement, that is length, upon current I. I is expressed in fundamental quantity in terms of the A and time t. All are the fundamental quantity. Acceleration can be written as velocity upon time. So here we have mass, length upon A t. This t is again fundamental, so this will become t square. Velocity को हम फिर से लिख सकते हैं, that is displacement upon time. Displacement again can be expressed in terms of the length. So here we have mass, length square upon A for current, and this is time Q. Hence we have here L of power 2, mass M1, T minus 3 and A minus 1. So this is the dimensional formula for electric potential, and if you want to write down the unit is volts. The next physical quantity we'll take, that is electrical resistance. Electrical resistance, which is denoted by capital R.
we know Ohm's law, V is equal to IR. So from this we can write down R is equal to V by I. V के लिए हमने अभी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला है, सो डायरेक्टली वी कैन राइट डाउन L स्क्वायर m1 t minus 3 a minus 1 upon I. I is nothing but what? करंट. तो करंट को हम फंडामेंटल क्वांटिटी A के टर्म में लिखते हैं. सो इफ यू राइट डाउन दिस हियर, तो दिस इज इन द डिनोमिनेटर. ये जब ऊपर जाएगा दिस विल बिकम -2. सो दिस इज L2 m1 t minus 3 and A minus 2. So this is the dimensional formula for electrical resistance. And हमें पता है electrical resistance का unit क्या होता है? Ohms. So unit for electrical resistance is ohm. Like this. Next we'll take, that is conductance. Conductance is denoted by capital G. And this is the reciprocal of resistance. So G को हम लिखते हैं 1 by R. Just now we have find out dimensional formula for the resistance. So resistance का value है L2 m1 t minus 3 a minus 2. So all are in the denominator. अगर ये ऊपर जाते हैं, so dimensional formula for conductance is L minus 2 m minus 1 t plus 3 a plus 2, and this is the formula for dimensional formula for the conductance. Next physical quantity we'll take, that is electric field. Electric field, which is denoted by capital E. And formula for electric field is potential, electric potential upon D, that is a length. Electric potential मतलब जो प्लेट्स के बीच में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है, एंड ये प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, दैट इज D, राइट. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया इन द प्रीवियस पॉइंट, दैट इज, और यहाँ पे अगर निकालना है तो वी कैन डू इट, बट आई विल गो डायरेक्टली, और इसका आंसर आता है आपका L2 m1 t minus 3 e minus 1 अपॉन डिस्टेंस, दैट इज L1. तो अगर ये ऊपर जाता है, सो दिस L विल कैंसल, तो यहाँ पे हमें आता है L1 m1 t minus 3 a minus 1. सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर हमें इसका यूनिट निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट मीटर पर मीटर, दैट इज कैपेसिटेंस. Capacitance. We know capacitance C is equal to charge upon potential V. So C, charge को हम लिखते हैं current into time, and potential को अगर find out करना है तो I'll solve here. So V potential is nothing but what? Work upon electric charge. Work upon electric charge, that is Q. So work को हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज को फिर से I इंटू टी. फोर्स को हम लिख रहे हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट S, एंड दिस इज I टी. तो अगर हमें मास, दिस डिस्प्लेसमेंट को हम L में कन्वर्ट करते हैं, I इज फंडामेंटल क्वांटिटी A एंड दिस T इज एज इट इज. एक्सेलरेशन को लिखते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी को लिखेंगे displacement upon time. So this is m l a t square. Velocity को लिखते हैं displacement upon time. So if we solve this, we'll get m l square a t q.
मतलब अगर हम इसे लिखते हैं in terms of the dimensional formula, then we have here L square m1 t minus 3 a minus 1. तो यहाँ पे we can write this directly. अगर मैं यहाँ पे convert करूँ for this, यहाँ पे हमारे पास आएगा this is potential, मतलब work upon electric charge, वर्क अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज Q, और इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया ये. तो विल राइट डाउन हियर I को लिख सकते हैं A, दैट इज A1, T को T1 अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए वी हैव सॉल्व दिस, एंड हमारा आंसर आता है यहाँ पे L2 M1 T minus 3 A minus 1. और अगर हम इसको ऊपर लेके जाते देन फाइनली वी हैव हियर L minus 2 M minus 1 T. यहाँ पे 1 है और ये प्लस 3 हो जाएगा, मतलब 4 एंड A 2. So this is the dimensional formula for the capacitance. Angular momentum. Angular momentum is denoted by capital L. L is equal to mvr. So m is what mass, r is nothing but what radius. Radius को हम L के टर्म में लिख सकते हैं, तो this is L. Velocity को लिखेंगे displacement upon time. Okay, तो ये बन जाएगा m. L displacement is nothing but what length, so this will become L square and time t. So finally we have L2 m1 t minus 1. This is the dimensional formula for the angular momentum. Then we have permittivity of vacuum. Permittivity of vacuum, or we can write free space, which is denoted by epsilon naught. Now here we know Coulomb's law. Coulomb's law क्या है? Force is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट. तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट निकाल सकते हैं. सो एप्सिलॉन नॉट के लिए फॉर्मूला बनेगा हमारा 1 अपॉन 4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. इन सिंपल वर्ड वी कैन राइट हियर, ये 4 पाई इज अ कांस्टेंट, नो यूनिट. Q1 Q2 को हम Q स्क्वायर लिखेंगे एंड दिस आर स्क्वायर. सो फाइनली विल राइट डाउन हियर चार्ज का स्क्वायर अपॉन F R square. R is nothing but what? Length. So we'll do that. So Q is what? That is charge. Charge को हम लिख सकते हैं current into time. इसका square upon force. Force के लिए हमारे पास already we have derived the formula. Force के लिए हम लिखेंगे mass into acceleration. Then acceleration को हम लिखेंगे velocity per unit time. फिर velocity को हम लिखेंगे displacement upon time. And finally we will get that is L1 M1 T minus 2. ये फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एंड R इज नथिंग बट व्हाट? लेंथ. तो लेंथ स्क्वायर. अगर हम इसे सॉल्व करते हैं फाइनली विल गेट I के लिए फंडामेंटल यूनिट है A, सो दिस इज A स्क्वायर T स्क्वायर. नीचे हमारे पास है L क्यूब M1 T minus 2. So when we solve this finally we'll get dimensional formula for permittivity of the vacuum, that is L minus 3 M minus 1 T 4. ये ऊपर जाएगा तो this will become 4 and A 2. This is the dimensional formula for permittivity of the free space. Next physical quantity we'll take, that is magnetic field. We know magnetic field is denoted by capital B.
Now, the force experienced by charged particle when enter in a magnetic field with velocity v, then we can write that force is equal to qvb. Here, force experienced by the particle is F, Q is the charge on particle, V is the velocity of particle, and B is the magnetic field strength. So, from this equation we can write B is equal to F upon QV. Here, F is nothing but force. We can write force is equal is mass into acceleration, Q is current into time, and velocity is displacement upon time. If we solve this, we will get acceleration. Mass is fundamental. I and T is also fundamental. This length is fundamental and this T is also fundamental. This T will get cancelled here. Acceleration can be written as velocity upon time. Now we have mass upon time. Then here we have I into L. I fundamental quantity for current is A and this is length. Now we have velocity. Velocity can be written as displacement upon time. So finally we have here mass S, that is length, T square A L. Again this L will get cancelled. So here we have L naught M1 T minus 2 A minus 1. So this is the dimensional formula for the magnetic field, and the unit of magnetic field is Tesla. Then we have next physical quantity, that is magnetic moment. Magnetic moment. Magnetic moment is denoted by capital M. So we can write here capital M is equal to I A. Here I is the current, A is the area of cross section. So here I, we know fundamental quantity for current is A and area is L square. So here we can write down L square A. This is the dimension of the magnetic moment. Next physical quantity we'll take, that is magnetic flux. So magnetic flux is denoted by phi, which is equal to B into A. Here A is area of cross sectional, B is the magnetic field strength. Now we know F, that is force experienced by particle when it is entered in the magnetic field, is equal to QVB. So from this equation we can write B is equal to F by QV. So if you want to write down, so we can write phi is equal to F upon QV into area. Area is nothing but L square. So here force is mass into acceleration. This L square is as it is. Then we have a charge. Charge is what? Current. We know current is equal to charge upon time. So here charge is equal to IT. So we'll write here IT, and velocity is nothing but displacement upon time. So let us solve this. Here we have mass L square. Fundamental quantity for current is A into T. This displacement is nothing but length. So this is L upon T. So this T is getting cancelled. Then remaining is here acceleration. So we can write acceleration as velocity upon time. Now we'll simplify this. We have M L square. Velocity is nothing but what? Displacement upon time. So displacement, so I'll write displacement L upon time T, and this time is as it is here, so I'll write here square, and here we have A L. If we solve this, again this L is getting cancelled. Mass
m L square A T square. If we solve this, we'll get here L of power 2 m1 T minus 2 A minus 1. So this is the dimension of magnetic flux. The next physical quantity we'll take, that is, it was a NEET question. Find out the dimension of mu naught epsilon naught raised to power minus 1 by 2. So this thing can be written as 1 upon square root of mu naught epsilon naught. And we know this is the formula of what? Velocity of light, c. So c is what? It's a velocity. So the dimension of velocity is what? Velocity is nothing but displacement upon time. And we know displacement upon time, matlab dimension of velocity is, I'll write here displacement upon time. Displacement is nothing but length upon time t. So the dimension is what? L1, m0 and t minus 1. If they have asked us for the unit of this quantity, we know this is equal to what? The velocity, right? And the velocity is nothing but, unit of velocity is meter per second. So this is the unit. This is the dimension of this term, the Planck's constant. Planck's constant is denoted by h. Now we know E is equal to h nu. So from this equation we can write h is equal to E by mu. Now we know what is the dimension of energy. अगर हम यहाँ पे हाफ mv square कंसिडर करते एनर्जी को, then we have mass, velocity is nothing but displacement upon time and इसका square. So we have a energy का dimension is L square m1 t minus 2. So we'll write here L square m1 t minus 2 and frequency. Frequency is what? 1 upon t. Means frequency ka dimension is what? T inverse. So we'll write here t minus 1. So finally the dimension of the Planck's constant is L square m1 t. ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, this is minus 1. Next physical quantity, that is gravitational constant. Gravitational constant is denoted by capital G. We know formula F is equal to G m1 m2 upon r square. So from this equation we can write down G is equal to F r square upon m1 m2. So G is equal to, force को लिख सकते हैं mass into acceleration, r square m1 m2 is nothing but mass, so we'll write here mass square. Okay, so acceleration के लिए we know this is velocity upon time, इसको लिख सकते हैं displacement upon time मतलब t square. So finally we'll get here this mass is getting cancelled with this mass. So acceleration के लिए we will write here s. S is nothing but what? Length. So this length is here upon t square. Mass है and here we have r. R is what? Radius. Radius is again what? Length. So r square hai, means here we'll take a L cube. So finally we have here L cube m minus 1 t minus 2, and this is the dimensional formula for what? Gravitational constant. Next physical quantity we have, that is Stephen's constant.
Now we know Stephen constant is denoted by sigma, which is equal to E upon area into time into temperature of power 4. This is the formula. By using this, we'll find out. We know energy. Just now we have calculated energy. So this is M1 L2 T minus 2. Area is nothing but what? L square. Time is T1. And this is temperature. This is what? It's a temperature. We know for temperature we have theta. So theta raised to 4. So finally we'll get here. This L square is getting cancelled here. Means L of power 0. M1 T minus 3 and theta minus 4. So this is the dimensional formula for the Stephen constant. Which is denoted by capital R. We know for 1 mole of gas we can write PV is equal to RT. So from this equation we'll write R is equal to PV by T. Here P is the pressure, V is volume and T is the temperature. So pressure can be written as force upon area, volume is nothing but L cube and temperature is T. Now this L cube is fundamental and we have here temperature. Temperature can be expressed in terms of theta. So this is also fundamental. Then we have a force. Force is nothing but mass into acceleration. So here we have mass into acceleration and A is what? It's the area. We'll write here L square. If we solve this, here we'll have L only. So we have L m upon theta. A can be written as velocity upon time. Then this can be written as L m theta t, and velocity can be expressed in terms of displacement upon time. Displacement is nothing but what? Length. So we can write here L square m theta t square. So finally we'll get here L of power 2, m of power 1, t power minus 2, theta of power minus 1. And this is the universal gas constant, dimension for the universal gas constant. I hope you understood all the physical quantity and their dimensions. Thanks for watching this video. Take care.